So today we are going to cover chapter 2 of class 7th NCERT New Kings and Kingdom. Okay, so for this first you need to know the topics that we are going to cover today. So we are going to study about the rulers, about the emerging dynasties that emerged during that period. Okay, and we are going to cover the period between 7th to 8th century. Alright, and we will also study about the administration. Okay, under administration comes prashastis, that how did they recorded themselves, and land grants which were made to Brahmins by the rulers. Okay, so this is the content that we are going to cover today. So let's begin. First, we will know about the dynasties that emerged during 7th century. Okay, so I am going to circle the important ones. Chahamanas. Chahamanas were also known as the Chauhans. आपने चौहान्स वर्ड सुना होगा, चौहान, ठीक है. चौहान्स भी इन्हें बोला जाता है and they mainly ruled the area of राजस्थान. और शुड आई से नॉर्थ वेस्ट. ओके, हम इनके बारे में आगे चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे. गुजारा प्रतिहास, राष्ट्रकूटास, चोलास and palas, and of course chandelas. So these were some of the important dynasties that emerged after 7th century, and we are going to cover them one by one in our coming chapter. First, okay, so of course there were rulers in these new dynasties and there were also Samantas. Now who were Samantas? Samantas were the big landlords. They were the big landlords or warrior chiefs. They were also known as warrior chiefs. Okay, so they were very powerful and rulers needed their supported to keep their authority intact. ओके, सो समंतास वर वेरी पावरफुल, और जब इनकी पावर इंक्रीज हो जाती थी तो इन्हें महासमंतास या फिर महामंडलेश्वरा बोला जाता था. मंडलेश्वरा का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके, तो इन्हें ये टाइटल्स दिए जाते थे बिकॉज दे गॉट वेरी पावरफुल एंड इनके और भी अदर नेम्स होते थे. So when they get power, they started to assert independence because Samantas were subordinates to the rulers. ठीक है, ये रूलर्स के सबऑर्डिनेट्स थे, यानी कि उनके नीचे काम करते थे, बट उनके पास जब बहुत ज्यादा पावर आती थी तो वो रूलर से इंडिपेंडेंट होकर रूल करते थे. ओके, सो देवर समंतास एंड देवर राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास कौन थे? पहले राष्ट्रकूटास चालुक्यास के अंडर होते थे. They were dominated. Rashtrakutas were subordinated to Chalukyas. Chalukyas ruled in Karnataka. हमने पीछे मैप में देखा, Chalukyas ruled in Karnataka. All right. So first, initially they were subordinates to Chalukyas, but Dante Durga was a very influential ruler of Rashtrakuta dynasty. Dante Durga ने Chalukyas को हरा दिया in mid 8th century. in 753 AD to be precise. Okay, mid 8th century में दांते दुर्ग ने चालुक्य के रूलर को हटा दिया और फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया इन द डेक्कन रीजन. दांते दुर्ग यूज्ड टू परफॉर्म अ रिचुअल नोन एज हिरण्यगर्भा एंड दिस रिचुअल वाज यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मणास. ओके, सो ये पूछा जा सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट है दैट हु परफॉर्म दिस यज्ञ रिचुअल. ओके, बट देयर वर आल्सो सम रूलर्स हु वर एक्चुअली ब्राह्मणास बाय बर्थ. अगर आपको वर्णा सिस्टम के बारे में, इंडियन वर्णा सिस्टम के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, सो आपको पता होगा दैट रूलर्स वर मेनली क्षत्रियास. क्षत्रिय ही एक क्षत्रिय ही राजा बन सकता था. ठीक है, बट देयर वर रूलर्स हु वर एक्सेप्शंस. ओके, they were actually brahmanas who ruled. Who were them? Kadamba and Gujara Pratihar Harichandra. कादम्बा ने कर्नाटका में रूल किया था. ओके, एंड गुजरा प्रतिहार रूल्ड इन गुजरात. Clear? So these were the Brahmins who ruled. They were not Kshatriyas by birth. They were in fact Brahmins.
Moving on to next, we will understand that how these dynasties actually work. ठीक है, इतनी बड़ी डायनेस्टीज को एडमिनिस्टर कैसे किया गया. So there were several factors. We are going to cover a few of them only. So titles were adopted by the kings. High sounding titles. आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि राजा महाराजाओं का जब भी आना होता था दरबार में तो उनको बहुत ही बड़े बड़े हेवी साउंडिंग टाइटल्स से उनको बुलाया जाता था. ठीक है, सो हेवी साउंडिंग टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द किंग्स, जैसे कि महाराजा थे राजा. महाराजा धिराजा का मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रेट किंग. ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ता, त्रिभुवन चक्रवर्ता मतलब तीनों लोगों का राजा. सो दीज हाई साउंडिंग टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द किंग्स. नाउ हाउ डिड दे गेट द रिसोर्सेज? उनके पास रिवेन्यू कहाँ से आ रहा था? कोई भी डायनेस्टी होती है, ठीक है, एक डायनेस्टी बहुत बड़ी होती है, इट्स ह्यूज, इट हैज नंबर ऑफ पीपल्स, ओके, इट हैज नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी टेकन केयर ऑफ. तो उनके लिए रेवेन्यू कहाँ से आया? उनके लिए रेवेन्यू आया फ्रॉम द रेंट. दिस रेंट वॉज पेड बाय द फार्मर्स एंड द पीजेंट्स टू द लैंडलॉर्ड्स. फिर लैंडलॉर्ड्स इस रेंट का यूज करते थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस, for the maintenance of forts of the kings, for the maintenance of the other palaces, for the construction of temples and other buildings. Okay, so resources were collected from the producers in the form of rent, and then it was used as revenue for the establishment or construction of the other features. Okay, टैक्स वर कलेक्टेड, टैक्सेस वर कलेक्टेड, जैसे कि एक बेती टैक्स है, एक कादम्बाई टैक्स है. देयर वर सेवरल टैक्सेस. अराउंड 400 टैक्सेस आर मेंशन्ड इन एन इंस्क्रिप्शन बाय द चोलास. ठीक है, चोला का एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें उन्होंने 400 टैक्सेस का मेंशन किया है, जिसमें कि ये दो आपकी बुक में दिए हुए हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेती that was collected from the forced labor, kadamai that was collected as a land revenue. And now the question arises, ये टैक्सेस कलेक्ट कौन करता था? These taxes were collected by the people of influential families, only influential families. ठीक है, and this position was hereditary in nature. Okay, अगर कोई पर्सन है तो इसका बेटा ही टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर इसका बेटा उसके आगे का टैक्स कलेक्ट करेगा. ठीक है, दीज पोजीशंस वर हेरिडिटरी इन नेचर एंड दीज वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस. उनका एक दबदबा होता था सोसाइटी में, हु यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस. सो टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. किससे कलेक्ट किया जाता था? पीजेंट से, आर्टिशन से, in several forms. Okay, around 400 forms have been mentioned. So this is how it worked. Okay, that resources are coming from the producer, taxes are being collected. Okay, now moving on to next, under administration also comes प्रशस्तिस and land grants. प्रशस्तिस क्या होता है? प्रशस्ति एक बेसिकली आप अज्यूम कर लीजिए एक पिलर है और इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है. तो ये क्या होता था? ये सारी इंफॉर्मेशन होती थी अबाउट द रूलर, इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा होता था कि उन्होंने कौन सा वॉर लड़ा, कौन सा वॉर जीता. ठीक है, तारीफ लिखी होती थी, प्रेजेस, है ना. एंड ऑल्सो द ग्रांट्स दैट वर मेड. ग्रांट्स जो होता है वो आपका लैंड के फॉर्म में हो सकता है और काइंड अदर फॉर्म्स में भी हो सकता है और कैश के फॉर्म में भी हो सकता है. ओके, सो दीज प्रशस्तिस वर एक्चुअली composed by rulers only because they wanted to depict themselves. वो चाहते थे कि लोग उनके बारे में पढ़ें, उनकी हिस्ट्री को पहचाने, उनको आने वाले हजारों साल भी आज भी हम इन प्रशस्तिस को पढ़ते हैं जिनसे हमें रूलर्स के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसे रूल किया, कहाँ रूल किया. सो दीज प्रशस्तिस आर बेसिकली दी रिकॉर्ड, दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ओके, और इनमें ज्यादातर आपको रूलर्स की तारीफ भी देखने के लिए मिलती है. रूलर्स ग्रांटेड लैंड्स टू ब्राह्मणास. ब्राह्मणास, ब्राह्मण कौन होते हैं? प्रीस्ट. ठीक है, इनका सबसे ऊपर का दर्जा होता है इन अ सोशल ऑर्डर, राइट. तो उनको लैंड्स दी जाती थी और इन सब के रिकॉर्ड आपको कॉपर प्लेट्स के इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं. कॉपर प्लेट्स कुछ इस टाइप के आपके होते हैं. ठीक है, देन Kalhana was also a composer who composed a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया था उनके बारे में कालना नाम के कंपोजर ने भी लिखा हुआ है. So these are all the records. Now coming to the next important topic, tripartite struggle. Okay,
सो रूलर्स यूज टू फॉट वॉर्स, आपको पता ही है रूलर्स बहुत सारे वॉर्स लड़ते थे। इन वॉर्स उनको क्या मिलता था? वेल्थ, टेरिटरी एंड ऑफ कोर्स पावर, ठीक है, which gave them authority over people, right? So this tripartite struggle is considered as one of the most important struggles in the history of subcontinent. This struggle was fought between Gujara Pratihars, okay, Palas and Rashtrakutas, as you can see in this map, Rashtrakutas, okay. तो these were involved, इसलिए इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है, क्योंकि 3 रूलर्स वर इन्वॉल्व, 3 डायनेस्टीज वर इन्वॉल्व एंड दिस वॉर वाज फॉट ओवर व्हाट, किसके वजह से इतना सारा लड़ाई हुई? दिस वाज फॉट फॉर कन्नौज। कन्नौज इज अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी, क्योंकि तीनों ही कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे, और अंत में जीत किसकी हुई? जीत हुई थी आपकी who won this tripartite struggle? Pratihars. Pratihars won the struggle. Alright. So as you can see in the map, this is Kannauj, this is Gujarat Pratihar Empire, which mainly ruled Gujarat region. Rashtrakutas mainly ruled Deccan region, as we saw earlier. Palas mainly ruled Bengal region. ठीक है? So this was the tripartite struggle between these 3 powers. Pratihars emerged victorious and this was fought over Kannauj. So this is very important और ये आपका 8th century around लड़ा गया था. Okay, now we will study about few of the important rulers in our history. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान के रूलर थे। ये इन्होंने सेंट्रल एशिया के पार्ट्स को कंट्रोल किया था ओवर ईरान एंड ऑल्सो द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट को उन्होंने रूल किया था। सो he used to raid, loot and spend all the money in Ghazni. Al-Biruni was a composer who was appointed by him to write about the Indian subcontinent and Al-Biruni wrote the book Kitab-ul-Hind. इसमें हिंदुस्तान के बारे में, सबकॉन्टिनेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है उसका, इनफैक्ट कि कितने पहाड़ हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, everything was mentioned. So it is a very detailed composition by Al-Biruni. Second ruler that we are going to cover is Prithviraj III. ओके, पृथ्वीराज 3 वॉज अ चाहमना रूलर, जिनको द चौहान्स भी बोला जाता है। चाहमना डायनेस्टी रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, ओके, and they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Ghadwalas of Western Uttar Pradesh. So ये उनके rivals थे, ये उनके दुश्मन थे। Prithviraj III was a very influential ruler of Chamana dynasty and he fought with Muhammad Ghori in 1191, जिसमें वो उनकी जीत हुई, but 1192 में he lost to him. This battle came to be known as Battle of Teren. This battle is not mentioned in your book, but I thought आपको पता होना चाहिए, so I have mentioned the name. Please learn it. It was fought in 1191. Okay. Now, in our next class, we are going to cover the Chola dynasty. Chola dynasty is a detailed topic. इसमें हमें time की ज़रूरत है. That's why I am not covering this topic in this video. We will be covering it in our next chapter, next class. So till then, please let me know if you have any doubt, any queries, any suggestion in the comment section. So thank you very much. I hope it was good and take care. Happy studying. See you in the next class.